सरकार के जो टैक्स है वो टैक्स काफी बड़े पैमाने पे बढ़े हैं। बीजेपी जिस तरह से माइनॉरिटीज के ऊपर उसके पूरे इतिहास में जब से उसका जन्म हुआ है और उसके पहले तो आरएसएस ही था, तब से उन्होंने जो माइनॉरिटियों के ऊपर देश में जुल्म किया है उसका कोई भी आप देखो उदाहरण कहीं और आपको मिलेगा नहीं उस तरह से। वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन पर्टिकुलर एंड वायलेंस इन जनरल is becoming a norm in our country. The BJP RSS in power today is a dangerous force. Welcome to CPIM Digital. Comrade Mariam Dhawale, she is CPIM Central Committee member and IDWA General Secretary. We welcome her. Thank you. Here, some questions about recent politics. You know the 𝒂𝒊𝒂𝒏𝒏𝒆 incident in West Bengal. Everyone know. But after 𝒂𝒊𝒂𝒏𝒏𝒆, day by day, violence against women that are increasing in our state and in India also. And now also the judgment, the justice is now given. So what is your view about the gender issue? Now this is coming in forefront, but what is your view about the violence against women? And it is increasing, so I want to know. Violence against women in particular and violence in general is becoming a norm in our country. We are finding attacks on weaker sections of the people, Dalits, Muslims, tribals are under attack every day. And there is a kind of desensitization of society towards violence. On the other hand, we are seeing that the political forces today in power, the BJP RSS specifically in the country and the TMC in Bengal, we are finding that these are the people who actually justify the violence that is taking place and protect the criminals. Because basically these criminals are given patronage from the political parties in power. Yeah. Because of that, if you find even the conviction rate today in our country is not more than 27%. That means a large number of criminals go scot-free. On the other hand, for every case of violence, women have had to fight very major struggles to get justice. Now, what message does this send to the people of the country? That violence against women is something that will happen and has to be accepted. And so it is not looked upon as a struggle or as an issue of the entire society. Why should there be so much hue and cry, so much struggle, so many lakhs of people from all over the country coming out on the roads in the RG car incident? It is simple. They had to make that voice and struggle is because otherwise the victim would never have got justice. Exactly. Because the people involved in the crime are people who are close to Mamata Banerjee and the TMC and the state government. So today that link which is there, that link is so strong that women have had to fight very intense struggle. We saw it in the case of the wrestlers in Delhi. They have still not got justice. Yes. But unfortunately, the son of Brij Bhushan Sharan Singh gets elected to the parliament. We have seen in Karnataka, in that Prajwal Revanna case, the BJP supported candidate in Karnataka. Fortunately for our country, he lost the elections. Yes. But he could conduct violence against hundreds of women in the last so many years. Yeah. It is the use of power. We are seeing custodial deaths. We are seeing custodial rapes. But the shielding of the criminal is a very big issue in our country. That is one part. Second is, today violence against women is also become a caste and communal color it is given.
If the rapist is from a particular community or a particular religion, or the victim is from a particular religion, that is how society gets divided. For example, if the rapist is a Muslim and the victim is a Hindu, then there will be a big hue and cry that, you hang the rapist and all these kinds. But if the rapist is a Hindu and the victim is a Muslim, as we saw in the Kathua case in Kashmir, we saw that there were BJP people coming on the roads in defense of the accused. So violence is now getting a communal and caste color. So according to the caste and the religion of either the accused or the victim, that is how the lines are drawn, which is a very dangerous thing for women, because no woman will be safe then. Yes. So these are factors which society as a whole has to see. The CPIM has given a call and has been mobilizing women, and the 𝒂𝒂 has also been mobilizing large number of society on the roads, that we need to make society safe for women in this country. The public spaces have to be safe. We are seeing sexual harassment at workplace cases going on, and for years together, the women have had to fight. आशा आंगनवाड़ी कर्मी सब कुछ तो ना एकदम ये सब हो रहा है उनको साथ. The unorganized sector is the most in the most delicate situation, the most insecure condition. So there are no voices for them in this field. So that is why it has to be looked upon as a struggle where the entire society comes together and talks of an India that is safe, secure, stable for women, without which women cannot access public spaces. Their opportunities, their careers, their education, everything is affected. So that is why today, and that is why we say that the BJP RSS in power today is a dangerous force, and it needs to be brought down. It believes in a regressive ideology, which is the Manuvadi ideology, which talks of women as subordinate citizens, as secondary citizens. And this TMC government over here, we have seen your Mamata Banerjee has been always shielding the criminals. Right from Park Street case onwards, if you see, every single case, the TMC, it is the TMC goons who are the accused in these cases. But they have always been protected. In Kamduni also. In Kamduni too. They've always been protected. So it is for the people of Bengal also to rise, because no Bengali woman citizen will be safe in Bengal if these goons, and it has been totally exposed in that 𝒂𝒂𝒄𝒉 incident. Yes, we have to fight for that. Yes, as Comrade Mariam, you know, now the corruption is a very big issue in India. You see the Adani case. And in our state, corruption is everywhere. But our CM says, Chief Minister said, that corruption is not an issue today. What is your view about that? It is not an issue for them because they are making the money through corrupt practices. It is the issue for the people who are being looted through corruption. You have seen the massive scam during the teachers' employment scam. And we are finding the criminals getting bail from the court. Yes, today Partho Chatterjee, who is the former education minister, he is getting bail today. Yes, so that's the unfortunate situation now for us, because you see people who are accused of crimes, genuinely crimes they have committed, and it's true, but they are getting bail. But you'll find human rights activists, you will find people who are trying to defend the constitution are being put in jail and are being denied bail, under very stringent laws like the UAPA. So if you are fighting for the nation, you come under UAPA. But if you are looting the nation, then you are getting bail. That is the tragedy of our country. But you see corruption at the highest places today. Now the whole, you see in all these different things, selling of airports, selling of the railways, selling of ports,
roads, electricity, water, you name it, and it's being divided between Ambani and Adani. Now, Adani is a favorite of our Prime Minister Narendra Modi. Exactly. They are defending him like anything because he provides crores and crores of rupees to the BJP for elections. And you see, TMC is also keeping mum about this issue. Absolutely. Absolutely. It's like teri bhi chup, meri bhi chup. I will shield you in your corruption, you shield me in my corruption. So it is that, Sadgant, as they say in Hindi. Exactly. We are behind the screen, we are friends. Chapra. And outside the screen, we will show that we are not with him. So I will give you some slap and you give me some slap and let us do this natak in front of the people. Exactly. So we can fool the people equally. So you earn money upstairs, let me earn my money downstairs. And that is why, you see, there's an arrest warrant for Adani in America. Yeah. And the opposition are asking for a discussion in the parliament. Yes. Can you imagine? Never it has ever happened in the history of our country that such a big thing has happened. It's a black mark on our nation that one of the corporates in our country is going to be arrested in America. For corrupt practices. And they have proofs, but we are not even allowing a discussion about it in the parliament. Yeah. What has Mr. Modi to hide so much to protect Adani? That is the question that every Indian citizen has to ask. Yes. Why is Adani such a favorite for Mr. Narendra Modi and Amit Shah? Yes. What is their links with this entire corrupt practices? We have seen it in the electoral bonds. How many thousands of crores of rupees BJP got? Luckily, the Supreme Court struck it down, but before they struck it down, they already got thousands of rupees. Yes, and TMC is second party. And TMC is the second party. So it is all crony capitalism is working in our country. It is the corporates, it's the Adanis, Ambanis who are actually running the country in league with the government, pressurizing the government and sort of trying to get all schemes in place so that they can further loot the country forever. That's how it's happening. Now, these corrupt practices are harming the farmers, they are harming the workers because the labor laws have been changed to benefit the corporates. The land laws are changed to benefit the corporates. That is what is the samjhauta with the Adanis and Ambanis, and here in Bengal also, that you give us this much and we will make the laws according to how you want. Employment scheme also changed for the corporates? Employment scheme, and instead the government will help the employer. That is what the scheme says, that for the first few months, the government will pay half the wages of that new person who has been given employment. So every year, when a new person has been put into employment, the government will subsidize it to the corporate. But the new employment, the new person who is employed, the employee, has no guarantee that he will continue further, because every year, only the new employee will get the subsidy. So he may be employed for 1 year and then thrown out. And then again it will come. Then this whole Agni scheme, Agniveer. I remembered that Amitabh Bachchan Agnipath. Agniveer. So Agniveer is what? Same thing. No guarantee of job, nothing. So this is, you see, it's all this trying to demolish every institution in the country, not answerable. The government is not accountable. They think they rule the land. They are not running it through elections, because this whole electoral also, people are questioning the election results nowadays, that what is happening. In West Bengal, you have seen the corrupt practices during elections. They do not allow people to vote. They do not allow candidates to file their nominations. So this is all forms of corruption that is happening because they are looting the people of West Bengal right from the panchayat level. Exactly. And so TMC are saying that Sandesh Khali that happened in West Bengal is a part of that exploitation of women and exploitation of the people through robbing their land.
So Exactly. that is Yes. how the governments are Now- functioning. So they said that corruption is not an issue, but it is a issue to us, and we have to fight for that. Yes. Yes, and for that reason also, you see, what is your view that unimaginable price rise, unimaginable, it really has an effect on women also. Absolutely. So Absolutely. what do you think? What do you think? What is the principle? What is the reason for this unimaginable price rise? See, एक तो ये है कि पेट्रोल और डीजल जो है उसके ऊपर, उसके भाव के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है इस गवर्नमेंट का, और इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो जाने के बाद भी भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं कम हो रहे हैं। सरकार के जो टैक्स है वो टैक्स काफी बड़े पैमाने पे बढ़े हैं बहुत। अब पेट्रोल और डीजल खास तौर पे जब महंगा होता है तो उसका स्पाइरलिंग इफेक्ट होता है। अब सवाल है इसमें, हर एक चीज, ऐसा नहीं है कि एक चीज, हर एक चीज महंगी होती जा रही है। और पिछले कुछ महीनों में स्पेशली खाद्य जो सामग्री है, फूड प्रोडक्ट्स इतना महंगा हो गया है कि स्टारवेशन, मालन्यूट्रिशन, हंगर डेथ्स ये बहुत बढ़ने वाला है देश के अंदर। आप सब्जियां ले लो, आप मछली ले लो, आप चिकन ले लो, आप दाल ले लो, तेल ले लो, जो भी है बहुत महंगा हो गया है। अब इसके ऊपर रोक लगाने का काम तो सरकार का है। अब राशन व्यवस्था तो पूरी खत्म हो गई। अब वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार का वो 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन वो मुफ्त में 5 किलो कहाँ मिल रहा है आजकल? 3 किलो या 4 किलो ही मिल रहा है, वो भी सबको नहीं मिल रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि हम 81 करोड़ 81 करोड़ पीपल को हम लोग दे रहे हैं, पर ग्राउंड लेवल सिचुएशन जो महिला समिति और CPIM देख रही है, उस ग्राउंड लेवल सिचुएशन में हकीकत तो यही आ रही है कि सबको नहीं मिल रहा है। हाँ, और हम पेटिशन भी कर रहे हैं, फूड अथॉरिटीज को पेटिशन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप अपनी इंक्वायरी करो, हमारी इंक्वायरी कह रही है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है मिल रहा है तो हम आपको लिस्ट दे रहे हैं कि किसको किसको नहीं मिल रहा है, आप करिए इंक्वायरी। क्यों नहीं कर रहे हैं इंक्वायरी? क्योंकि सच्ची बात छुपाना चाहते हैं। तो महंगाई पे रोक लगाना ये सरकार का काम है, और बहुत क्रिटिकल इन्फ्लेशन के टाइम पर सरकार को मार्केट के अंदर हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है। और उस समय पे राशन के जरिए, सरकारी स्कीमों के जरिए, जैसे कोविड के टाइम पे कुछ हद तक लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट्स ने जहां जहां पे है और जहां जहां पे वामपंथी ताकतें हैं, उन्होंने लोगों को किस तरह से मदद की, बहुत मदद की एकदम। तो उसी तरह से सरकार तो इसीलिए होती है। लेकिन यहाँ पे ये सरकार को कोई परवाह ही नहीं है, महंगाई का कोई शब्द ही नहीं है उनके वोकैबुलरी में, कुछ नहीं बोल रहा है। तो महंगाई का असर बहुत बुरा पड़ रहा है, और खास करके औरतों पे, क्योंकि घर तो औरत चलाती है एकदम, तो वो अपना ही पेट काटती है। हाँ। और साथ साथ महंगाई जितनी बढ़ेगी वो औरत बाहर निकलती है मेहनत करने के लिए, सबसे मेहनत का काम, और जहाँ सबसे कम पैसा मिलता है। कहीं पत्थर तोड़ने का काम, कहीं कचरा उठाने का काम, कहीं कोई सब्जी बेचने का काम, कहीं इस तरह का अलग अलग किस्म का काम, जहाँ पे 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया दिन में कमा सके, उस तरह का काम कर रही है। मतलब उसकी मेहनत बढ़ गई, हाँ, उसकी जिंदगी पे असर पड़ता है। तो ये पूरा जो क्राइसिस हुआ है और महंगाई की वजह से औरतों के अंदर कर्जा बहुत बढ़ गया है, इनडेटेडनेस ऑफ विमेन। और ये सरकार ने तो MFI को तो छूट दे दी है, एकदम लूटो जितना लूटना है। RBI को हम लोग ने एक मेमोरेंडम भेजा, हाँ, लेकिन आज तक उसका रिप्लाई भी नहीं आया है। तो MFI के जरिए लूट मची है औरतों की जिंदगी में। हर एक गरीब औरत आज कर्जे के बोझे के नीचे दबी हुई है।
कोई बोल नहीं रहा है। औरतें आत्महत्या कर रही है उसकी वजह से हमारे देश में। पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा हुआ है। महिला समिति तो लड़ते हैं इसे लेके। आप लोगों ने भी तय किया है, हम लोगों ने भी लड़ते हैं। हजारों औरतों का सर्वे किया है आपने पश्चिम बंगाल में। उस सर्वे से पता चल रहा है क्या हालात है एकदम। तो ये पूरा ना एक चेन बन गया है। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ी है क्योंकि काम धंधा नहीं है, घर चलाना है, बच्चों को भूखे नहीं सुला सकते रात को, तो कर्जा लो, फिर कर्जा भर नहीं सकते हैं, आत्महत्या करो। ये पूरा ऐसा चेन हो गया है और महिलाओं के ऊपर ज्यादातर। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और इसके लिए ज्यादा तौर पे आवाज उठाना जरूरी है, नहीं तो हालात बहुत ही बेकाबू होने वाले हैं। ठीक है, हम लोग तो सब मिलके कोशिश करेंगे। और एक मैं सेंसिटिव इशू आपके पास लाना चाहते हैं। अब देखिए अभी जो द बांग्लादेश इशू, बांग्लादेश, एंड इन आवर स्टेट बीजेपी इज कैंपेनिंग ओनली torture on minority in Bangladesh, but they are keeping mum about the torture of minority in India. But we are against yes, this is a very sensitive issue in Bangladesh. We are against it. We are against any torture against minority of Bangladesh, and we are against any torture of any minority on any minority in India also. But what do you think? BJP has any right to say about this? Any right? No right. BJP has no moral authority. Exactly. Absolutely नहीं, उनको कोई ही नैतिक अधिकार ही नहीं है उसके बारे में बोलना, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से माइनॉरिटीज के ऊपर उसके पूरे इतिहास में जब से उसका जन्म हुआ है और उसके पहले तो आरएसएस ही था, तब से उन्होंने जो माइनॉरिटियों के ऊपर देश में जुल्म किया है उसका कोई भी आप देखो उदाहरण कहीं और आपको मिलेगा नहीं उस तरह से। और हाँ, जो वामपंथी है CPIM है, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी माइनॉरिटी हो, जो पिछड़े तबके हो, मार्जिनलाइज सेक्शन हो, उनके ऊपर कहीं पे भी दुनिया में अगर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाती है। वो हम इस तरह से नहीं देखते हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान है। Exactly. वो जो भी है इंसान है और उस देश का इंसान है, तो उसको उस देश में न्याय मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी का जो षड्यंत्र है बांग्लादेश के बारे में, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति जो करते हैं, तो यहाँ के जो बहुसंख्य समाज है उसको उकसाने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए वो बात उस तरह से उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियनों पे किस तरह से जुल्म हुआ, पूरा गांव का गांव क्रिश्चियन लोगों का खाली करवाने की कोशिश करी, चर्च पे हमले हुए, प्रीस्ट लोगों के ऊपर हमले हुए, और यूपी के अंदर आए दिन मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। इतना जुल्म हो रहा है, उनके घर बुलडोजर चलाकर गिराए जा रहे हैं। वो जो उत्तराखंड में यूपी के अंदर रोज हो रहा है ये एकदम। पेपर तो आप जानते हो मीडिया कैसा है हमारा। मीडिया तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, बताता भी नहीं है हकीकत क्या हो रही है। उत्तराखंड में वो जो टनल के अंदर फंस गए थे वर्कर्स, उनको निकालने के लिए दिल्ली से जो रैट माइनर्स लेके आए थे, उसमें एक रैट माइनर वो मुसलमान था, उसको शाबाशी देने के बदले, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी, उनकी खुद की जान उन्होंने खतरे में डाली और उनको बचाया, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उस रैट माइनर को कोई शाबाशी देना तो दूर की बात, उसके घर पे बुलडोजर डाल दिया, तोड़ दिया। वहां पे लेफ्ट जो है पार्टी CPIM जो है, उन्होंने सबसे मिलकर पैसा इकट्ठा करके कुछ लाख रुपया उसका घर फिर से बनवाया। तो मदद के लिए तो और कोई आता नहीं है,
हाँ। ये वामपंथी ही होते हैं जो हर बार कहीं बुलडोजर के सामने जहांगीरपुरी में खड़े हो गए, तो कहीं मध्य प्रदेश में किसी दलित का घर तोड़ दिया तो वहां पे चल गए, कहीं क्रिश्चियन पे हमला हो गया तो वहां पे चल गए। तो वामपंथी तो हमेशा ये माइनॉरिटीज हो, पिछड़े हो, गरीब हो, मजबूर लोग हो, तो उनके साथ खड़े रहते हैं। बीजेपी की तरफ से ये हमले हो रहे हैं सब जगह पर, फिर वो क्रिश्चियन हो, दलित हो, माइनॉरिटीज हो, जो भी हो, औरतें हो, ये बीजेपी के जो सभी नेतागण है इसमें फंसे हुए हैं और इसमें पूरा ही उनका ये चल रहा है। और ये जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको इस देश के अंदर ये जाति व्यवस्था को मजबूत करना है, उनको ये वर्णाश्रम के आधार पर इस देश को चलाना है। वो चाहते नहीं है कि दलित हो, आदिवासी हो, वो सीख कर पढ़ कर उनके बच्चे आगे आए। उनको उसी व्यवस्था के अंदर उनको दबा के रखना है। और ये हिंदुत्व राष्ट्र का उनका जो एजेंडा है, हाँ, हिंदू धर्म ये अलग बात है, हाँ, उसके बारे में जो जिसकी जो आस्था है वो रखे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। लेकिन धर्म का इस्तेमाल, मजहब का इस्तेमाल राजनीति में करके लोगों के अंदर नफरत फैलाना और नफरत की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बना देना, ताकि एक दूसरे के साथ में सुख दुख बांटने वाले पड़ोसी भी एक दूसरे के दुश्मन होके बैठे हैं कई जगह पर, सिर्फ धर्म के नाम पर। एक घर जलता है तो सभी जलेगा साथ में। हाँ। एक गरीब को जो जिस रेट में तेल मिलता है तो वो कोई भी धर्म और जात का हो, उसको वही रेट में मिलता है। एकदम ही बेच का लिए भी सही है। मजदूरों को जो एकदम वेतन मिलता है एक जैसा ही तो मिलता है। हाँ। तो एक भारतीय, एक धर्मनिरपेक्ष भारत का जो चरित्र है उसको खत्म करना, लोगों को धर्म के नाम पे पोलराइज करना, धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, ये सब जो नारा प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री एक धर्मनिरपेक्ष संविधान पे उन्होंने शपथ ली है, उसी का उल्लंघन वो कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुख की बात भारत के लिए क्या हो सकती है? तो ऐसे प्रधानमंत्री तो नहीं चलना चाहिए एक सेक्युलर भारत के अंदर, उसके खिलाफ तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। एकदम, इसीलिए बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन बीजेपी को कोई राइट नहीं है, ये एकदम सही बोला, बिल्कुल एकदम। इसीलिए हम लोग सभी को मिल के फाइट करना होगा, यही तो आपका बात है। अभी इजराइल में जो हो रहा है, पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, हाँ, आम लोग उनके साथ खड़े हैं। सरकार कहाँ खड़ी है? सरकार तो खड़ी है उस जुल्म करने वालों के साथ। हाँ हाँ, और ये तो हम लोग का ट्रेडिशन भी नहीं है। हाँ, हम लोग का फॉरेन पॉलिसी का ये बात भी नहीं है। हाँ, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक्स अ लॉट मुझे बुलाने के लिए। हाँ, ठीक है, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।